श्री नाम संकीर्तन की प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। This is the round, number of rounds that you are doing minimum. So last week we said no, there is nothing called as 2 से 4 round कर ही लेता हूँ. No, there is nothing like that in life. Correct. 2 से 4 जो बोलता है वो 0 करता है. Okay, we know that. So put 0 there. If it's 2 to 4 rounds, put 0. So what is your minimum? Without which you will not go to bed. Okay. Even if you have migraine headache. Okay. And if you have temperature of 101 and you realize at 11:30 in the night that I have not chanted today, ये मिनिमम करके फिर आप सोओगे. वो वाला कमिटमेंट भगवान के लिए, वो that number you will have to put. Okay. Not convenience chanting. जब convenient होता है तब करता हूँ वाला नहीं. Okay. Because this is important. Why is it important? Because of what are the processes of bhakti? What are the 9 processes of bhakti? You remember? Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Padasevanam, Atma Nivedanam. Okay. Out of all this, 99% of spiritual progress, please understand this today, 99% of spiritual progress comes through the quality of chanting. क्या बोला? 99% of spiritual progress comes through our quality of chanting. This instruction is for all of us. For all of us. It's not just that I have to tell you. ऐसा नहीं है. मेरे लिए भी है. But we should know this. So that even when we don't do it, we are fully aware कि मेरा spiritual life में बैंड क्यों बजा हुआ है. Correct, no? Because this is the core of our progress. In this lifetime, if we have to attain the spiritual world at the end of this lifetime, then what will happen? Then we will have to take this one thing very seriously. Why? मुझे कीर्तन गाना अच्छा लगता है बहुत. ठीक है, अच्छा है. वो मेरे को कीर्तन है, मेरे को ना बहुत सर्विस करने को अच्छा लगता है. मेरे को बोलो प्रभु मैं झाड़ू मारूंगा, खाना बनाऊंगा, मैं सर्व करूंगा, मैं बुक्स उठाऊंगा, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, मैं हरि नाम पे जाऊंगा. मेरे को ये सब बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी. प्रभु जी मेरे को गार्लैंड बहुत पसंद है. मैं गार्लैंड कर सकती हूँ? कर सकते हैं ना? कर सकते हो, ये सब है. लेकिन there will be a stage in life which is called as what? Old age. There will be a stage in life
जब ये सब करने के काबिल नहीं रहेंगे आप। आएगा अपने जीवन में, आपके जीवन में आता है, अपने जीवन में क्यों नहीं आएगा? इट विल कम, इट विल कम at that time what will sustain us, keep us fulfilled is what? The taste that we have attained in chanting the holy name. That taste does not come overnight in one day. ऐसा नहीं क्या बहुत कृष्णा 3 दिन से तो चैंट कर रहा हूँ, टेस्ट ही नहीं आया, you know, it doesn't work like that. भगवान भी बोलेंगे अरे यार मैं भी देखा तो चौक कितना दिन से बैठा है, 3-4 1 हफ्ते से कर रहा है तू यार। ऐसा होता है भक्ति में? नहीं होगा ऐसा। It will take time. It will take time. Okay. So it will take time for us to get a taste of the holy name. Does it make sense? तो आप पूछोगे ये when will this taste come to us? If you ever have that question, there are some people who will say क्या फर्क पड़ता है, टेस्ट आया नहीं है, दुनिया तो चल रहा है। My husband is working nicely. I also have a job. भगवान की दया से दोनों कमा रहे हैं अच्छे से, मॉर्गेज भी हो गया है, बेडरूम में अच्छा पेंट भी मारा है हम लोगों ने, we have made feature wall in the house. अभी भगवान की दया से प्रभु जी पहला हम लोग वो टोयोटा चलाते थे, अभी तो मर्सिडीज चला रहे हैं प्रभु जी। दिस इज हाउ वी थिंक, ऐसे ही सोचते हैं हम लोग। प्रभु जी हम लोग मतलब उनका भी बहुत ड्रीम था, मेरा भी बहुत ड्रीम था, यूरोप जाके आएंगे हम लोग। तो हम लोग अभी भगवान की दया से पैसा आया है, हम लोग यूरोप घूम रहे हैं, हम लोग आईफिल टावर जाके देख के आया, ये देख के आया, वो देख के आया। दिस इज हाउ आवर लाइफ विल गो, यादा 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 यादा। आफ्टर दैट एट स्टेज विल कम व्हेन वी विल ऑल रियलाइज दैट वी हैव वेस्टेड आवर लाइफ। पक्का आएगा, अभी मजा आएगा, उसके बाद पक्का आएगा। और दूसरा, हाउ मेनी ऑफ यू फील एक्सटेसी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम यूरोप वेकेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम? 4 दिन का खुशी है। किसके लिए यूरोप जाते हैं हम लोग? Mostly, who do we go? Why do we go to Europe? Correct. We go for others to Europe. Correct. We go for others. Okay. So that ये सब सक्सेस होता है ना, ये सब we like, you know, I am very successful, I am very social, देखो मेरा गाड़ी देखो, मैं कैसा जी रहा हूँ, I am very happy. अंदर के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, सब लोग? We are weeping because there is no fulfillment in the heart. Okay. Because the soul is searching for Krishna. हम लोग सिर्फ भगवान को ढूंढ रहे हैं, हम लोग को पता नहीं है। We don't know that we are searching for happiness in God. We don't know we are, but we are all searching for that bliss. Okay, we don't know that. So we search for that happiness in so many other things. We think that ऐसा होगा, वैसा होगा, जीवन बाद में ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। The happiness is only in one thing. What is that? In bhakti. बाकी सब useless waste of time है। In Bhagavatam there is a verse. I don't know. I don't remember the ये open. Okay, चलो ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। धर्म लिखिए। Okay, ऐसा लिखो। SRAMA, Sharma, not Sharma. SRAMA. Google it. One person Google it and then we will tell everyone what verse it is. It is, I think, in first canto of Srimad Bhagavatam. SRAMA. 1.1 या 1.2 में. SRAMA. लिखा सब लोगों ने Google में? SRAMA. Okay. And then you put a gap and write EVAHI. हाँ, very good. हाँ, Shrama Evi Kevalam. So put that. Okay. And then tell everyone which Srimad Bhagavatam verse it is. 1.8. हाँ, everyone go to 1.2.8 of Srimad Bhagavatam. Okay. वो verse हम लोग आज 1.2.8. Everyone open machine? आपके पास आ गया? प्रभु जी उनके पास नहीं है. He doesn't have cell phone. हाँ इधर हाँ very good. Okay, this verse always remember in your life. Bhagavatam 1.2.8. Okay. धर्मस्व अनुष्ठिता पुंसं विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेद् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्. Okay, who wants to read now? The occupational नहीं वो बस 2-3 बार बोल, मन में बैठ जाएगा। ये बस बोल। धर्मस्व अनुष्ठिता पुंसां
विश्वक्सेन कथासु यः विश्वक्सेन कथासु यः नोत्ताद्येद्यति रतिं नोत्पादयेद्यति रतिम् श्रम एव हि केवलम् श्रम एव हि केवलम् धर्म स्वनिष्ठिता पुंसा धर्मस्वमनुष्ठिता पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येद्यति रतिम् नोत्पादयेद्यति रतिम् श्रम एव हि केवलम् श्रम एव हि केवलम् धर्म स्वनुष्ठिता पुंसां धर्मस्वमनुष्ठिता पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येत यदि रतिम् नोत्पादयेद्यति रतिम् श्रम एव हि केवलम् श्रम एव हि केवलम् धर्मसनुष्ठिता पुंसां धर्मस्वमनुष्ठिता पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिं नोत्पादयेद्यति रतिम् श्रम एव हि केवलम् श्रम एव हि केवलम् Anyone? Once last. धर्म स्वनुष्ठिता पुंसां धर्मस्वनुष्ठिता पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु न यः विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदि रतिम् नोत्पादयेद्यति रतिम् श्रम एव हि केवलम् श्रम एव हि केवलम् इंग्लिश धीरे से जोर से The occupational activities a man performs according to his own position are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the personality of Godhead. once again for your The occupational activities a man performs according to his own position are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the personality of Godhead. this is for women also man लिखा था ऐसा मत the occupational activities a woman performs according to her own position are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the personality of Godhead. So, न उत्पादयेद् यदि रतिम रति मतलब क्या attraction उत्पादन means what production न उत्पादयेद् यदि रतिम हम जो भी कर रहे हैं if it does not evoke sentiments for Krishna then what is our activity श्रम ही केवलम but घर लिए है क्या लग रहा है आपको घर लिया है हम लोगों ने वो वाला 2 फ्लोर वाला नॉट एक वाला मतलब अंदर स्टेयरकेस भी है व्हाट इज दैट कॉल्ड एज इफ इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग रति फॉर लॉर्ड यूजलेस लेबर बेटा ग्रामर स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गया 90% स्कॉलरशिप दे रहे हैं मेलबर्न ग्रामर माय सन इट इज व्हाट इज इट कॉल्ड एज व्हाट काइंड ऑफ लेबर यूजलेस लेबर प्रोवाइडेड इट डजंट प्रोड्यूस अट्रैक्शन तो जो भी हम लोग कर रहे हैं दे आर अ वेस्ट ऑफ टाइम वक्त सब खत्म करने वाला है इफ वी आर सिंपली बिजी एंड सेइंग दैट मेरे पास भक्ति के लिए समय नहीं है बिकॉज मैं बहुत बिजी हूं अभी व्हाट आर यू सेइंग आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड फॉर डूइंग ऑल माय यूजलेस एक्टिविटीज बट फॉर द रीजन दैट आई हैव गॉट माय ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ आई डोंट हैव टाइम फॉर इट That's what we are saying. And saying to who? वो बोल रहे हैं आजा भाई मेरे पास मत सड़ना है रुकना है बिजी हूं ना अभी दिख नहीं रहा है क्या तेरे को क्यों बार बार बुला रहा है मेरे को लेकिन द डे मैं बिजनेस में मेरा नुकसान हो जाएगा ना और मैं कहीं का नहीं रहूंगा मेरे को जल्दी ले लेना तभी तू टाइम पे आ क्योंकि अभी मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है बहुत मैं पैसा कमा रहा हूं अभी मेरा बच्चा पहला सब एस कुमार का शूटिंग पहनता था आजकल वो डॉल्सन गब्बाने से नीचे बात भी नहीं कर रहा है
हमारा पूरा फैमिली, हमारा सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का, वैसा हम लोग को ड्रेस करने का है। एंड उसके लिए हम लोग को फोटो में डालना है अपने को, वो और दिखाना है लोगों को, राइट? तो वो अफोर्ड करने के लिए हम लोग कमा रहे हैं, right? For doing all those things, because we are obsessed with that. That I want, the goal of life is to make so much money, इतना पैसा कमा के, I'm not happy with one house. I want 50 houses, and I will take mortgage. And because of mortgage में ऐसा मेरा गला दबा रहा है बैंक, mortgage inflation is going up, but I will do that. I will sacrifice my bhakti for all these nonsense things, and after that, what will happen? Krishna, when I know that I am making a mistake. You also know I am making a mistake, but Krishna, please pardon me with this mistake, huh? Because when everything feels useless, that time you have to come on time. तू please मेरे को समझ लेना, आज मेरे को तेरे पास टाइम नहीं है, but whenever I want your time, you must come on. तुझको आना पड़ेगा. As if he is our servant. Krishna is giving us an opportunity. He gives us opportunity many times. He gives us these messages, sometimes in an entertaining way and sometimes in a very cutting way. Okay. We have tried to give this message in entertaining way. Now time has come to give. Now we have to become serious. We have to become serious. Who is this for? For me also. I also have to become serious. If you see me slacking, you tell me also. क्या कर रहे हो? Okay, so we have to take it seriously. ये भक्ति is not a part-time activity. कृष्णा सब बिजनेस हो गया, आज थोड़ा फ्री टाइम है यार अपने पास, चलो हरे कृष्ण। कल टाइम ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं यार, अभी और भी करना है, अभी टैक्स ईयर एंड भी आ रहा है, अभी बिजी हूँ मैं थोड़ा। Is this the approach? Are we going to tell the Lord that I am busy making money right now? Whenever I get time, I will approach you. But जब भी मेरा वांदा होगा, that time you have to be available to me. ये कैसा सौदा है भाई? What are we asking the Lord? Is this an acceptable सौदा? No, it's not acceptable. That means we are just treating him like a doormat. जब चाहिए मैं करूँगा, जब मैं busy रहूँगा तुम मत आना. This is absolutely not acceptable. Because please understand, in this material world, किसी का जीवन ऐसे बदलता है. Person is going very nicely in life. It just takes one medical report for things our life to take a U-turn. Everything will become meaningless. I'm telling you. सब कुछ बेकार लगेगा जिंदगी में उसके बाद. ना आपको आपका घर पसंद आएगा, ना आपको आपका गाड़ी में कोई रुचि आएगा, ना आपको आपका ग्रामर स्कूल का जो प्रेस्टीज में कुछ आपको दिलचस्पी होगी. Just one medical report is required. क्यों वेट करना है? And at that time, if we are not developed enough strength, then what will happen? हम लोग ना material life तो वैसे भी enjoy नहीं कर पाएंगे. Correct? Either it happens to us or worst is it happens to our near and dear ones. One report, and our whole life will become meaningless. Meaningless. कुछ मतलब नहीं रहेगा उसको, कुछ भी. तो ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, ऐसा हो सकता है. So therefore material world जो promises दे रही है ना, उस पे भरोसा मत कीजिए. Do not fall into the traps of the material world. When do we go away from devotional life? Only when we get some success in material life. When we get failures, understand it's the best time for bhakti. When we get success, we will not look at God. We will simply be relishing in our success. मैं उड़ रहा हूँ आसमान में, अभी मत आना. मैं अभी ऊंचाई पे हूँ मेरे जिंदगी में. This is the attitude of most people. But when things go wrong, as I said, one medical report and everyone runs to God after that. And then after that they ask, why me? Why not you? I gave you enough time. I gave you good health. I gave you enough money so that तुमको 4 वक्त का रोटी के लिए कभी इधर दर ठोकरें नहीं खाना पड़े. I gave you enough time. तुमको जो जीने के लिए चाहिए मैंने दिया. अभी तुम जीने के लिए नहीं कमा रहे हो, अभी तुम कुछ और चीज में फंसे हुए अभी. Do all of us have enough for roti, kapda, makan? Yes or no? Then what is the problem? What is the problem? What more do we want? What is that we are working for, by which we do not have time
for coming to the Bhakti Vriksha regularly and for increasing your chanting. क्या है ऐसा वो क्या है वो ऐसा चीज? हाँ, यू में से अभी तक विश्वास नहीं आया तो कुछ सवाल पूछिए, आस्क क्वेश्चंस. अगर भगवान पे विश्वास नहीं आया तो किस पे विश्वास आया है आपको? कॉर्पोरेट लाइफ पे विश्वास आया हो, वहां तो टाइम दे रहे हो आप. यू आर गिविंग टाइम टू बिजनेस, यू आर गिविंग टाइम टू ऑफिस. So if you are giving time to bhakti is dependent on your faith in bhakti, then if you are giving more time to corporate life, it just seems automatic inference is what? That I have more faith that my corporate life will take care of me and I'll be very very sorted out with my business and my corporate life and I'll make so much money that मुझे कुछ नहीं होगा. What is this complex? What do you say? Think about it. टाइम कब आ जाए पता नहीं. It can be around the corner. We say old man. Who is an old man? A man who is 70 years old, who is destined to live up to 90 is an old man, or a person who is 24 years old who is going to live at 26. Who is old? Who is old? किसके पास वक्त कम है? So do not think that बहुत टाइम है अभी ओल्ड एज में करेंगे. It has to be taken seriously. If you read the newspapers, you will see that low class people are taking over countries. Can you see that or no? Is that not evident to you? Low class people, third class men are coming to power in this world. It is predicted that there is a golden age for bhakti that will last for the next 10,000 years. उसके बाद कलियुगा will deteriorate rapidly. These 10,000 years you will have saintly people on the planet. That's what it means. It doesn't mean that the leaders are saintly people. It doesn't mean like that. Which means at least you will have saintly people. But persecution of pious people will become worse and worse with time. ये अपना सौभाग्य है कि in this lifetime we have got this knowledge of Krishna Bhakti and we have got an exit route from the jail. प्लेन में आग लगा हुआ है. What will you look for? Will you say थोड़ा ठंडा भी लेके आना यार? Will you say that? What will you look for automatically? You will look for exit route. और ध्यान चल अभी देखो बिजनेस क्लास वाला नीचे उतर गया प्लेन से. अपन बिजनेस क्लास में बैठते हैं, कभी बैठा ही नहीं. How does that sound? Ridiculous. The plane is burning and what will you look for? So you have to be convinced that the plane is burning. If you are not convinced the plane is burning, despite the fact that you would see people dying every day in and day out, then you will say, और you will say, हाँ अच्छा बेचारे लोग हैं, अच्छा प्लेन में आग लगा है, रुको ना, मेरे पास तो आएगा ही नहीं आग, मैं तो सेफ हूँ, पीछे वाला सीट में हूँ, पता नहीं कहाँ से आग है. Right? So therefore, this process has to be taken very seriously. Bhakti is not a part-time activity. ये बात अगर मैं आपको डे 1 में बोलता तो आप लोग बोलते थे बहुत स्ट्रांग बात करते हैं, हमको नहीं जाना है ऐसा प्रोग्राम में. हमको ऐसा प्रोग्राम में जाना है जहाँ पे आनंद और शांति का एहसास हो, जहाँ पीपल विल टेल करो ऐश करो, भक्ति भी कीजिए जब वक्त मिलेगा. हमको वैसा प्रोग्राम अच्छा लगता है क्योंकि what is happening? Nobody is interfering with my freedom to enjoy the material world. They are giving me user-friendly instructions. User-friendly instructions. भक्ति में user-friendly instructions नहीं मिलेगा. वो सब सिर्फ इनिशियली बोलते हैं user-friendly instructions. पहले से हार्ड देंगे तो कैसा होगा ना? Even IIT JEE will start with what? A plus B the whole square is A square plus 2AB plus B square. बाद में आएगा अच्छा टेंशन एनालिसिस भी करना है, 3rd level of integration भी सिखाएंगे. ये तो पता ही नहीं था, मैं तो आता ही नहीं था कोटा. Correct or no? Everything will start. So we have to take this seriously. Otherwise, next lifetime there is no guarantee. Again, I'm saying you know all these things. Next lifetime में there is no guarantee human life भी मिलेगा. और अगर मिला तो भी कहाँ पैदा होंगे पता नहीं. And now the way things are, persecution is happening.
It is almost very clear that people are trying to, some of the communities are trying to increase their population to get a hold, stranglehold on the world. There are two countries which are very, the Islamic countries are there, and then there is China. थोड़ा इसको erase कर देना. So आज हम चैंट कर पा रहे हैं, कल को शायद ये मौका भी ना मिले. So let us not plan to remain in this material world. Let us don't plan to remain in this material world. Chanting is the Yuga Dharma for Kali Yuga. Chanting, as I said, 99% of our progress in bhakti comes from the quality of chanting. We may say, I like kirtan more than japa. We may say, I may like kirtan more than japa. But we have to then question, are we doing kirtan because we have developed love of Godhead or because we enjoy it? This is a question to ask. Why am I more attracted to one type of thing and not the other? We have to. So yes, kirtan is meant to be musical. Kirtan is meant to bring people towards God because initially people will come for music. And many times, what will happen, if the singer is not good enough, then people will not come late for the program. But if the singer is singing very nicely, then they will come early. हमको कीर्तन सबसे अच्छा लगता है. Now कीर्तन क्यों अच्छा लगता है? Is it because आपको holy name में taste आया है, या because you enjoy music generally? This is a question. So surreptitiously our mind will tell us that you are progressing in bhakti, whereas holy name में taste नहीं आया होगा. Right? So we have to be very very बहुत सोचने वाला विषय है. So that's why this verse is very powerful from Bhagavatam. Any activity that we do, if it takes us closer to Bhagavan, भक्ति का उत्पादन यदि हुआ, नहीं हुआ तो श्रम एव ही केवलम. Whatever we do. For example, some of us can get positions of power in bhakti. For example, one of you may become temple president tomorrow. One of you become head of the northern suburb, western suburb, Bhakti Vriksha leader. बहुत कुछ हो सकता है. लेकिन तुम वो क्यों कर रहे हो? वो क्यों कर रहे हो? You know, when Anirudh Prabhu formed the Bhakti Vriksha committee in Melbourne, he appointed some of us. So he said, take charge. And he specifically told me, you manage it. The first thing, prayer was what? To the Lord, भगवान कहीं बहक ना जाओ. ये सब titles हो में. Because titles are very, मतलब अच्छा लगता है सुन के. हिंदी में गाने ना, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, सुना है वो गाना आपने? तो कभी भी हफ्ते को कोई जनरल मैनेजर तू ही है बोलेगा तो अच्छा लगता है अपने को. यू आर द हेड, यू आर इन चार्ज, यू आर द डायरेक्टर. ये सब अच्छा लगता है सुनने के लिए. क्या डायरेक्टर, मरने वाले हैं हम लोग, राइट? सो व्हेन ही सेड, when the group got together, myself, Ojasvi Prabhu, Karunatha Prabhu, Gopaladesh Prabhu, Yamuna Sundari Mataji, we all got together. The first thing we decided is that we will check each other. Any one of us is getting attached to power, position, prestige, controlling others. अगर हुआ तो we will tell each other off straight away कि प्रभु अभी मजा नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा कंट्रोल वाला दिख रहा है मेरे को इधर, अभी आप पावर एंजॉय कर रहे हो बैठ के. We will work with full utmost integrity with only one mission, that we have to expand Lord Chaitanya Mahaprabhu's reach, because people are miserable in the outer world. We are like those people वो bushfire में जाते हैं ना खाना वाना देने के लिए, वैसा वो अगर बोलेगा ये bushfire का भाई लीडर कौन है भाई इधर, मेरे को पोजीशन देता यार, वाइस प्रेसिडेंट bushfire coordination. How ridiculous it sounds. The whole mood is gone. It's an activity of compassion, right? उसमें भी आप leadership ढूंढ रहे हो. Right? You have not fulfilled it in your corporate life, so you come here and do this nonsense. Right? So therefore, integrity, purity of purpose, desire is what Krishna sees. So bhakti may be, that's like corporate life, we get rewarded. Bhakti may be, we will get rewards for doing nice bhakti. We will get recognized the senior devotee, leader, Peter, ये सब आएगा. But at the end of the day, there is only one truth. What is the truth? Have I developed taste for the holy name through those activities? ठीक है, management somebody has to do in the temple. Somebody has to take leadership positions. But through that leadership position,
I'm forgetting the basic principle. What is that? The occupational duties a man performs according to his own position. So if you are given the position of some management role, are only useless labor if they do not provide attraction. So through every service, the goal is what? To get connected with the Lord and to keep Him in the center, not us in the center. The moment we keep us in the center, what will happen? धीरे धीरे करके क्या होगा? We will lose our relationships with people and we will lose ourselves the taste for doing the service. Because मजा ही नहीं आएगा उसमें, because मैं center पे बैठा हूँ. We will stop doing it. We will only do it till the time that I am in power or I am enjoying it. And the same is true for any service, be it garland service, kirtan, anything. That is why the more important than anything is what? Most important is what? Than anything? Chanting. If we are not doing this chanting, we may be doing anything else and we may become popular also because of something that we do, because Krishna has given us talents. But it is what? Useless labor if it is not making us humble and taking us back to Godhead. So I was studying this week. I spent a lot of time studying the Chaitanya Charitamrita. I was just immersed in that book. Okay. Today also I spent a lot of time, many hours in studying. So that was a wonderful statement Prabhupada writes. Prabhupada says that quality of chanting will give us humility. Quality of chanting. I was thinking, my goodness. Sometimes I question myself. I look at the mirror and say, are you humble? And every time mirror has said, you are a rascal. तो humble नहीं है. तो अपने आप को तू तिलक पहन के धोती पहन के घूमता है बस. तो humble नहीं है. That is what mirror is telling me every time. And then I'm thinking, करूँ क्या? And as the Prabhupada is giving me a very fundamental answer, it is telling, humility will come by quality of chanting. When someone focuses on the holy name very attentively, then one will automatically become humble. When we become humble, what is the sign of humility? We will not do anything to impress others. When we become humble, we will not do anything to impress others. And therefore, which activity do we do to impress others? Buying a car, buying a house, घर को सजाना, ये सब करते हैं ना हम लोग. So that everyone comes, so that everyone is impressed with the way we are living. तो वो काम हम लोग बंद कर देंगे. ये नहीं बोलो घर को साफ नहीं करना चाहिए. Cleanliness is godliness. There's no doubt about it. But we will do it to the extent that is required to make our house a temple. उससे ज़्यादा नहीं, right? We will stop our dalliance with material energy. Material energy के साथ जो हम लोग करते हैं ना, चलो आ जाओ दोनों संग संग नाचते हैं. माया तू और मैं. वो बोलते हैं कौन सा डांस है वो? ऐसा करते हैं ना. Okay, our dalliance, this is called dalliance in English. We will stop our dalliance with the material energy. वो बंद हो जाएगा अपना. Because we will understand that एक ही सच्चाई है. हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलम नास्ते गति. So ये जीवन में it is very important to utilize our time and question every day, am I progressing in my bhakti or am I not progressing in my bhakti? Any of your father has got diabetes here? Anyone's father? Raise your hand. Okay. Suppose you see your father, he likes Cadbury's chocolate. And if he likes Rasgulla, he is to खा रहे हैं बैठ के. Will you monitor your father or will you not monitor your father? And will you try to bring him out of that Rasgulla or will you not try to bring him out of that Rasgulla? Will you or will you not? You will never bring him out. मरने दो उनको. खाने दो, ऐश करने दो, मर जाए. Is that how you will do? No, you will not. You will try to somehow or the other, because you love you don't want him to suffer and go to dialysis stage because kidneys have failed. Correct, no? So you will be very tough. Are you trying to control your father? पिताजी को बोल रहे हो, उनका freedom है ना, उस पे आप you are encroaching into his personal space. Suppose father tells you this language, what will you tell your father? Daddy, I love you, shut up and listen. Will you not tell him that? क्योंकि ये क्या है? In Gujarati we say ये तो प्रेम छे. This is the language of what? This is the language of love. This is love. Love में कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है. लव में सिर्फ प्यार होता है. और प्यार में किसी को डांटने का अधिकार
होता है, ऑफिस में नहीं। ऑफिस में डांटेगा तो who the hell are you to tell me? Okay, so therefore sometimes devotees out of their affection and love for us will be strict with us, but please do not mistake it for saying that don't encroach into my personal territory, don't tell me what to do. ऐसा नहीं, we will tell you what to do after some time if you are not doing it. Why? Only for one reason, we are concerned, that's all. We are, गलत है concerned होना. Don't you want someone to be concerned about you? Prabhupada said, if someone has yelled at you because you are not doing your bhakti properly, understand that you are the most fortunate soul in this world, rather than those shenanigans who will keep fanning you all the time. आपके जैसा ना देखा ना सुना, उनसे डरो, because they are the people who you scratch my back, I scratch your back. They are the people who want a good name with everyone. कितने अच्छे हैं वो, हम लोग जो भी करते हैं वो बोलते हैं बहुत अच्छा है। ऐसा चाहिए अपने को लोग जो अपना खुशामद करते रहेंगे, and we will let her fall in the gutter. पिताजी कितना अच्छा है, आपको शुगर कितना पसंद है, रसगुल्ला आप खाते रहते हो, इतना अच्छा मीठा डिश है, खाइए आप, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो नो प्रॉब्लम, यू ईट रसगुल्लास बिकॉज यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग. There's no connection. Because father is going to go down the drain after eating that, right? He's going to kill himself. So therefore, just like we advise our loved ones, in this program also, the stage has come. Now we will be asking you about your sadhana. From next program, the start, उसका शुभारंभ आज हुआ है with the chit. Okay? We want to help you all come to the platform of, do you want to be helped or you don't want to be helped? If you don't want to be helped in the process, then you are wasting your time in this program. But if you want to be helped, you are in the right place. उतना ना बोलो, वो निर्णय आप ही का है, मुझे ये सब नहीं करना है, ठीक है भाई मत करो. Nobody forced anyone, right? But अगर if you are serious, ये lifetime में I want to focus on the most important thing of my life, जिसके लिए मुझे जीवन दिया गया है, मनुष्य जन्म, then you are in the right place. How many of you are open to this idea? Okay, everyone? ठीक है? Easy हो गया काम फिर. Then we will all go back to Godhead together in this lifetime. ठीक है? We will all go to the spiritual world. Maybe आगे पीछे होगा, सब जाएंगे. इस गंदा जगत में नहीं वापस आना है. क्या दिया है? What has this life given us anyway? Right? कुछ चंद लम्हों का खुशी and lots of misery. We have discussed it enough times. Okay. Whenever now devotees talk to me, everyone has this problem. प्रभु जी यहाँ घर तो ले लिया, प्रभु जी अभी मॉर्टगेज भी भगवान के दया से एक मॉर्टगेज तो भर गया. Everyone is in this position. When you are in 40-45, most people are here. वो एक घर का हो गया है मॉर्टगेज एटलीस्ट अपना, अभी दूसरा घर का भर रहा हूँ. बिकॉज वो रिटायरमेंट के लिए अभी प्लान करना है, क्योंकि बच्चे लोग, चिल्ड्रन आर टेलिंग दैट अभी यू वांट टू कम टू इंडिया, दे हैव बिकम व्हाट, ऑजी माय, दे हैव बिकम ऑजी माय, राइट? वो थोड़ी उधर आके पढ़ने वाले इंडिया में आके, और आप खुद भी तो लेके नहीं जाओगे, बिकॉज यू आर एट अ पॉइंट इन टाइम where you can't go and work in Hinjewadi or Mangalore STP, what is that? Chennai STP in Infosys. You can't, because traveling में गुजरात में भी से हांजा गगड़ी गया, बराबर बोला ना? हाँ, ट्रैवलिंग में आदमी खत्म हो जाता है, and not to speak of Mumbai where I come from. Try one day entering the local train, you will realize material world पता चलेगा क्या है उधर. Like sardines, people are packed inside, right? You don't have a choice once you enter where you are thrown out of, in which platform. It's like that, right? So therefore, we don't want to come back into this world. And now we can't go back to India also. ये हम लोग midlife crisis में हैं, हम लोग. We are in midlife crisis right now. न यहाँ मजा आ रहा है, न वहाँ जा पाएंगे, बराबर है ना? Right? We neither enjoy corporate life nor we can afford not to enjoy corporate life.
We have to motivate ourselves. Yeah, it's exciting. We have to listen to the CEO speech. Good morning, everyone. Yes, excellent year, excellent quarter last year. We are in interesting times. पक गया यार 20 साल पहले भी यही बोला तू वी आर इन इंटरेस्टिंग टाइम मेरे को आज तक समझ में ही नहीं आया इसका मतलब क्या है वी आर इन इंटरेस्टिंग टाइम्स नो तभी बोल रहा था वी आर इंटरेस्टिंग टाइम्स नो दिस इज द एज ऑफ ईआरपी उसके बाद 10 साल बाद बोला वी आर इन इंटरेस्टिंग टाइम दिस इज द एज ऑफ नो क्या बोलता है वो अभी वो चालू है नया दिस इज द एज ऑफ इंटरेस्टिंग टाइम्स द इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू अ वेरी इंटरेस्टिंग पीरियड this is the time that we require. We have achieved quite a lot in the last financial year. Thanks to all of you. But for you, खुद बना CEO बैठ के politics कर गए. But for all of you, this would not have been possible. It's your success. आप नहीं बोल सकते हो. Promotion तो तेरे को मिला ना CEO का. तेरे को क्या दिया? नहीं बोलोगे ना आप. But वो बोलेगा speech में. I owe my success to all of you. But for all of you on the ground, excellent work. Let's give all of you a big hand. ये बकवास है दिस इज बकवास ही इज डूइंग चीटिंग ओके बाद में क्या बोलेगा ऑफ कोर्स व्हाइल वी कैन गिव अस अ पैट ऑन ऑल आवर बैक दैट यू हैव टेकन आवर बैंक टू द नंबर 2 पोजीशन वी कैन नॉट रेस्ट ऑन आवर लॉरेल्स दिस इज द टाइम दैट वी हैव टू लिफ्ट आवर गेम वी आर अप अगेंस्ट लॉट ऑफ कॉस्ट प्रेशर्स everyone is expected to do certification मरो तुम लोग 12 घंटा बैठोगे ऑफिस में करेक्ट उसके बाद मूंगफली का एक पैकेट दिया जाएगा आफ्टर वर्किंग लेट बिकॉज बाय दैट टाइम यू वर्क लेट व्हाट एवर मनी यू अर्न इधर तो उधर ऑप्शन में जा रहा है 275 1,350,000 1 million इधर $1,000 महीने का आने के लिए आदमी का हालत खराब हो जाता है उधर बेड पे बेड चला है 1,000 another 2 उधर मजा आता है ऐसा वाइफ के साथ सूट पहन के खड़ा रहकर ऑप्शन में बेड करने 1 नहीं why you not bidding what's wrong it's so beautiful oh you are so handsome wonderful couple तो वो भी चढ़ा दिया अपने को बोलता मैं अच्छा हैंडसम तो और लोग भी देखते हैं ना अपने को ताली बजाते हैं बाद में देख रहे होता है क्या किया मैंने यार क्या किया 15 बेडरूम क्यों चाहिए यार 2 आदमी रहने के लिए क्यों चाहिए उसको फिर टाइम ही नहीं मिलता है चैंटिंग को वैक्यूम करना पड़ता है ना ऊपर भी नीचे भी बहुत टाइम जाता है घर साफ करने को फिर सब रूम में एक फ्लावर पॉट रखना पड़ता है फिर उसको पानी डालना पड़ता है फिर वो बेडरूम में उधर से कुछ निकलेगा Oh my God, I'm trapped. I don't have time to check. होता नहीं, हाँ? So therefore, अभी सोचिए, अभी से आगे से सोचिए. Question everything. Don't become fool number 1. Don't come into all this. ये सब flowery language of material life. वो material माया ऐसा ही करती है. पुलिस किसको ज्यादा तंग करता है? The obedient कैदी or the fellow who is trying to escape? Who police tortures? नहीं obedient को थोड़ी torture करेंगे. Obedient को बोलेंगे अच्छा भैया आपला मारो चले दे नहीं अच्छा मराठी नहीं आता ना आपको. ओ अपने आदमी है यार. ये कुछ नहीं अच्छा है वो काम करते रहे वो पाटिल उसको छोड़ दे. वो है ना वो शिंदे वो भाग रहा है जेल से उस पर नजर रखा ये यहाँ 4 फटका लगा उसको अगला बार भागने की कोशिश किया उधर टाइल तोड़ा है उसने यार वो पीछे जेल में वो उसके बाद वो चाकू लेके घूमता है उधर पकड़ उसको करेक्ट और नो सो हु इज दैट जेलर इन आवर केस माया एंड हु आर वी आर ट्राइंग टू एस्केप द जेल ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस सो माया आएगी और माया कैसा प्रपोजल देगी हाँ एक गाना था वो शाहरुख खान वाला मुझे याद आ रहा है तुझे पुकारता है तेरा आने वाला कल नहीं है मंजिले नहीं है रास्ते सुना ही नहीं कोई ये गाना वो राजू बन गया जेंटलमैन का गाना है शायद द ओपनिंग सीन ओके द शाहरुख खान इज बीइंग इनवाइटेड दैट यू हैव अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ अहेड कम पूरा जिंदगी तेरे लिए वेट कर रहा है दैट प्रॉपर्टी इज वेटिंग फॉर यू आजा खरीद ले लगा फेसबुक में ठीक है so if that is good enough so this is time management that's our now we will begin our class
टाइम क्या हो? So 890. so टाइम मैनेजमेंट में ना 90% टाइम मैनेजमेंट किस में होता है पता है? एलिमिनेटिंग यूजलेस एक्टिविटीज. इसके लिए मैं ये वर्स बताया, एलिमिनेट यूजलेस गार्बेज एक्टिविटीज ऑफ योर लाइफ. सबके लिए टाइम मिलेगा आपको करने के लिए लाइफ में. From tomorrow onwards, what do they do? अपना, you know, when I was in, I used to work with a company called Larsen and Toubro. No? So what happened was, sorry, I used to work in a company called Larsen and Toubro. So one day, I was actually before I joined the company. Okay, in engineering we have the sandwich pattern training होता है company में जाना. So for that also I went to L&T only. Eventually I worked there. Okay, that was after engineering. Okay, so वहाँ पे I was given a job to go and take घड़ी. In Marathi जैसे घड़ियाल घेऊन आला. वो वर्कर लोग जो करते हैं ना, काम करते हैं ना वहाँ पे, I have to go and monitor them घड़ी लेके whether really that work requires that much time or not. It's called as work and time study and motion study. I was asked to do that. If you're doing industrial engineering, you'll understand what I'm talking, right? So मैं घड़ी लेके जाता था. And these people are claiming overtime of almost 30-40% overtime they were claiming. But when I took the study, they only had 40% work in even the 8 hours that they had to do. Baki sab was what? Time pass. So productivity improvement did not necessitate buying any state-of-the-art machines. Yes. Yes. Productivity improvement did not necessitate any new technology. All it entailed was what? Avoiding wasteful activities. Mataji, one minute. Did I give both? No, be careful. Give this to her. I don't know. You let her take. Sorry, what was I saying? So eliminate wasteful activities. Even the principles of total quality management say what? Eliminate waste. Eliminate waste. Eliminate waste से आदमी बहुत कुछ कर लेता है. So same is true for time management. Eliminate wasteful activities. So let's complete our class in time management in the next half an hour. Now I don't know how many of you want to make notes. नहीं याद रहेगा पता नहीं मुझे. Okay, इसको बनाना है बनाइए, नहीं बनाना है आपके ऊपर है. We will not force you, but if you write down, you may remember something. Okay. So analyze your day patterns. Don't be busy running in life so much that you don't know where you are running. इतना मत busy हो जाना कि वक्त के लिए वक्त नहीं है. अपने वक्त के लिए वक्त नहीं है आपके पास. Okay. Go back. If required, take one day off and go to that, what is it? Dandamang में है ना, माउंटेन रेंजेस उधर, या तो इधर जीलोंग झेड़े में भाग जाना. सबको बोलो फोन स्विच ऑफ रहेगा मेरा. एंड वहां जाके शांति से बैठो और लिखो मेरा जीवन किधर जा रहा है. थिंक. Nobody will be there with you. Okay, sit alone. And you know who says this very often? Burijan Prabhu tells in the retreat often that you have to spend time with yourself. तन्हाई में बिताना वक्त. Don't be with anyone. Otherwise again वही WhatsApp में आएगा, वो साईं बाबा का फोटो आएगा. Send it to 50 people, otherwise you'll get leprosy. Okay. Something will come. Okay. ऐसा कुछ तो आएगा वो पॉलिटिशियन का. तमिलनाडु में बाढ़ आया, दुबई में बारिश आया. Some nonsense will come and waste time, right? So try to see whether Facebook, LinkedIn, what is that? Instagram. I'm telling you, I promise you, मैं Facebook एक्सेस ही नहीं किया. एक्सेस नहीं किया मतलब कभी ना कभी वो अकाउंट क्रिएट करके रखा था किसी ने, कोई दोस्त ने किया मेरे लिए शायद. मैंने, मुझे याद भी नहीं है मैं फेसबुक कब किया. मैं आई नेवर हैव बीन इन फेसबुक, नेवर, नॉर इन इंस्टाग्राम. और क्या है आजकल? ट्विटर. जी रहा हूं भाई, जी रहा हूं, खुश हूं. लॉस्ट नथिंग. डू यू थिंक ट्विटर से भक्ति बढ़ेगा? नहीं. वो क्या है, वो कितना अच्छा अच्छा फोटो आता है ट्विटर में. महाराज का लेक्चर है. महाराज का लेक्चर में वेबसाइट है ना, जाके सुनना. ट्विटर क्यों चाहिए? lecture is there. I will give you lecture on the WhatsApp group. How many lectures you want, right? So mind will tell you. So assess how much time is going on all these useless things, responding to useless WhatsApp messages. नहीं तो वो आएगा. लक्ष्मी एंड राघव का वेडिंग एनिवर्सरी है. कौन सा ग्रुप है ये? रिलेटिव्स ग्रुप.
अप्पा किसी का every day somebody is some wedding anniversary is there, birthday is there, मुंडन is there. वो daily है वो. And then wish नहीं किया, you have to send flowers, wishes वगैरह वगैरह. Again waste of time. इसमें सब time जाता है अपना. WhatsApp major waste of time. So assess where is your time getting wasted. Think, see, you may not be able to control it. वो अलग बात है, वो उसके लिए हम बैठा है ना. But at least you should know where your time is going. First step is what? Data collection. Data analysis last. Data analysis नहीं, recommendations last में आता है. After data analysis. First step is what? Data collection. So collect data on your own life. कि कहाँ मेरा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किधर जा रहा है मेरा. भगवान ने 24 घंटा दिया है. And we work so hard, nobody can even say, कोई अगर बोल रहा हूँ प्रभु मैं तो कुंभकर्ण हूँ, मैं तो 16 घंटा सोता हूँ, ठीक है, एटलीस्ट क्लियर है. बट मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन स्लीप फॉर 7 hours बिकॉज वी आर बिजी मेकिंग मनी. करेक्ट. 7 घंटा भी सोता नहीं है, खाते भी नहीं है हम लोग. वी आर मल्टीटास्किंग. ऐसा खा के एक हाथ से लैपटॉप चल रहा है, ब्राउन बैग लंच दे कॉल. राइट. सो देयरफॉर असेस कहाँ जा रहा है मेरा टाइम. सो देन यू विल कम टू नो व्हाट इज एसेंशियल इन योर लाइफ and what is a time waster. If you want, use Stephen Covey's quadrant. You know Stephen Covey's quadrant? Magic, they call it as quadrant. Stephen Covey's quadrant. You know what is Stephen Covey's quadrant? Urgent, not urgent. Important, not important. There are 4 quadrants. Urgent, not urgent. Important, not important. Which quadrant should you address first? Priority क्या होता है? That which is urgent and important. If you work only on the urgent and important things, are you efficient? No. Such people are called as firefighters. आग लगा हुआ है, which quadrant does it come under? Urgent and important. But if you prevent a fire, if you work on how to prevent a fire, then you are working on the important activities before they become urgent. That is called as proactiveness. That's what he says is the first habit of highly successful managers. They work on important things before they become urgent. For example, as simple as make a will so that your property goes to your children before it becomes right. नहीं तो आप सोए रहोगे, साइन मारना है, वो सांस जा रहा है, साइन किधर मारूं मैं. You understand? I'm saying, I'm telling you a practical thing, right? Very important. Have you thought about it? No. So do it before it becomes. File your income tax on time before it becomes urgent and you get. Pay your bills on time before that red mark comes. उसमें $25 administrative charge, right? Because वो कमाना पड़ेगा आपको $25 overtime करके. Does it make sense? So assess. What are the urgent and important things, and spend time on these things. Why are these things becoming urgent in my life? Can I address these important things before they become urgent? Classic example of for all of us, I'm sure everyone agree with this, is the way we studied in life. We studied when? Exam का 4 दिन पहला. Something has now become, something important has become urgent. But usually, who will be the topper of the class? Never that guy who studies in the last minute. That guy will be throughout regularly, thoda. It's not that he has to be a Maggu number 1. It's not like that. I have seen Maggus also in the school who will keep on studying. But I have studied, especially in MBA, I have seen brilliant minds. Okay, I have worked with some of the people who are very big people in the world today. Right? They were all my batchmates. They will do small things and have enough time to do everything. I will give you a personality who studied with me. His name is Siddharth Roy Kapoor. You have heard him. Everyone knows about him. Vidya Balan's husband, right? He is my batchmate in Jamnalal Bajaj, 97 batch, right? He and I together handled the placements of our college, right? Very proactive guy. He had time for everyone. He had time to talk to everyone, always smiling, joking, fooling around, pulling everyone's leg, and very successful in his life, right? So that is, so if I have to think of someone materially, if I say spiritually, बहुत लोग हैं, but materially this is proactiveness, right? So this is the formula for success. Doing things on time before they become urgent.
Okay, this is important. Now we'll come back to spiritual life and apply that principle. Let our spiritual life not become an urgency, burning urgency later on, जब हम शायद कुछ कर भी नहीं पाएंगे, right? So small things. For example, I will be shocked actually if I open this. I'm actually scared to open this. वो जिधर zero दिखेगा मेरे को heart attack आने वाला है, because I will think इनके पास 6 मिनट नहीं है डेली. ऐसा क्या बिजी है ये लोग, जो हम भी तो बिजी हैं, हम भी कॉर्पोरेट लाइफ में हैं भाई, हम भी पैसा बना रहे हैं. इनका क्या स्पेसिफिक सिचुएशन है कि ये लोग को 6 मिनट नहीं मिल रहा है. बच्चे भी है ना, बच्चे सबके हैं, पेरेंट्स सबके हैं, जॉब सबके हैं. क्या है? Correct. So I'll be shocked when I see that number here. I'm telling you right now. Okay, you're in trouble with me. Dean said you will not judge it. हाँ, जज नहीं करूंगा, शॉक्ड बोला ना. शॉक तो हो सकता है ना, बच्चा फेल होके आया है स्कूल से, तो शॉक तो लगेगा ना माँ को. चाइल्ड इज डेड, डोंट जज. बच्चा आई एम कंसर्न, तू 0 लेके आया है, करेक्ट है ना? हाँ, कोई बात. अभी से ही आई एम गेटिंग सिग्नल ना, इधर ना अभी मिटिगेशन स्ट्रेटेजी चल रहा है. Okay, I don't want to scare. So you're right. We will not judge anyone, but we are concerned. We will have to do something about it. We will have a discussion. We will have a parent teachers meeting. अभी ऐसा नहीं हो सकता. Call your parents. I won't have a parent teacher meeting. Because sometimes parents will say, क्या अच्छा खासा तो है ना, घर वर बनाया, तो गाय को उनको इधर सपोर्ट कर रहा है तू. Like parents may say like that. Right? Many of our brahmacharis, their parents are complaining. क्या कर दिया मेरे बेटे को. पहले तो नॉर्मल था, अभी हरे कृष्णा बोलता है. पहले तो दारू पी के पहले चिल्लाया, बेटा दारू वारू मत पीना, लेकिन अभी बंद करके अभी ऑनलाइन कर ली, तो अभी उधर अभी पहले तो नॉर्मल था, दारू वारू पीता तो वही अच्छा था, नॉर्मल था वो. बिकॉज दैट इज नॉर्मल इन दिस वर्ल्ड. इन तमिल इट सेज निर्वाण देशत्ल व्हाट इज दैट ब्रो, என்னது தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. In a country where naked people are going, if you wear cloth, people will laugh at you. क्या कपड़ा पहन के आए थे उसको, पागल. Because that is the norm in this world. The whole world is going against the current of bhakti. Therefore, if you are standing like this, if you wear tilak and come now, people will think pagal hai to. That is what, and we will be afraid of that. And therefore we will not do. Right? Because the world, you are allowing the world opinion to control you, and then what will happen, your destination will be also of those people who are of this world, and at that time they will not come to save you. अरे तू तो मेरा यूनिफॉर्म पहन के आया था ना, चल मैं तेरे को बचाता हूँ. No sir, it will not happen. They will also go in the gutter, we will also go in the gutter along with them, but we will be aligned with them. Right? We don't want that, right? So eliminate wasteful activities. Question, what are the wasteful activities? Number 1. Now you asked me to recommend a timetable. Now when I recommend a timetable, I will sound like a school teacher, but because you asked me, I have to serve you in that way. Okay, so I will do that. Decide the time when you are going to bed. Your full devotional life is dependent on that, and this I am saying based on personal experience. Because whenever I don't go to bed on time, okay, my devotional life is gone. My chanting is damadol. Because I am not a person who can sleep at 12 o'clock and wake up at 3:30. He is like that. He can do that magic. मेरे पास नहीं हो, मेरे से नहीं होगा. मेरे को 7 घंटा नहीं सोया, मैं गया काम से. How many of you are like me here? Most of the people, right? मैं ऐसा हूँ, मेरे को नहीं जमता वो सब सर्कस, right? So therefore, if you are like me, your bhakti, your chanting will be top class, depending on the time when you go to bed. सुन रहे हो ना? Your chanting will be as good as what time you go to bed. Do not ignore this. What is our competition? What is the competition to sleep? Who is the competitor to sleep? TV, IPL, Netflix. These are competitors. So पहला वहां पे you know at least realize करो. Control करना is the next stage. At least realize that ये मेरा जान का दुश्मन है. ये मेरे और कृष्णा के बीच में आ रहा है.
एटलीस्ट रियलाइज तो करेंगे, तो थोड़ा शेम तो होगा अपने को ना. अगर शेमलेसनेस पे आ गए तो फिर क्या है, अपना पैसा से मैं किया, क्रेडिट कार्ड से, तेरे से थोड़ी लिया पैसा नेटफ्लिक्स का. देन वी विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, मैं तो कमाता हूं इतना, तो नेटफ्लिक्स में मैं दूंगा तो क्या प्रॉब्लम है. We may have a problem, but at least we will humbly acknowledge it and be humble. ठीक है, and we will not bluff to ourselves that we don't have time to increase our chanting, right? So therefore, what time we go to bed is the number one deciding factor. Most devotees whose chanting is top class are people who go to bed early, and you know what? They have good health also. अपना health भी जाता है when we don't sleep on time. And health गया तो क्या जाता है? Wealth भी जाता है, right? So therefore, the first principle of time management is going to bed on time, except on Fridays. You're here. ठीक है, because somewhere we need to learn also, no? To go to bed on time. That's here. Okay. If I say यहाँ पे आप बोला कल से भक्ति रक्षा में नहीं आऊँगी. Okay. So at least what you do, and the way to do it is, do not be arambashur. You know what is arambashur? Arambashur in Marathi means what? उत्साहमयी, we call in भक्ति. चलो 7 दिन हम लोग 3:30 बजे उठते हैं कल से. कुछ नहीं होगा, 3 दिन उठोगे और सब लोग को फेसबुक में, इंस्टाग्राम में डालोगे इमीडिएटली. Nowadays I'm chanting at 3:30 in the morning. और क्या होगा उसके बाद, क्या भाई आजकल पोस्ट नहीं आ रहा था, नहीं वो ट्राई किया, नहीं वो जमा नहीं. 3 दिन वाला वो कपिल देव वाला इनिंग, वो वीरेंद्र सहवाग वाला शॉर्ट इनिंग्स था वो, 10 बॉल्स में 50 रन मार के आउट हो गया. वो नहीं है. Bhakti is a marathon race. It's not a 100-meter race. It's not a, oh, I have come to 16 rounds. और बाद में 4 दिन के बाद, 4 महीने के बाद, वो आया था, बहुत जल्दी आया, लेकिन आया राम गया राम, राइट? वो वाला नहीं है. भक्ति में we have to progress. हर एक कदम जब एक आगे लेते हो, फिर वहां से पीछे नहीं जाओगे. That is consistency. Only then you will come to the निष्ठा platform. Otherwise निष्ठा नहीं आएगा, right? So do small things in your life. Do kaizen. Kaizen means what? Continuous improvement. Not big. Don't go for finance transformation. Do small kaizens. छोटा चीज करो अपने जीवन में. For example, if you are sleeping at 12 o'clock in the night, sleep at 11:30. Possible है. चलो ठीक. 11:40 पे सो जाओ. Then उसके बाद next week go to bed at like that. So our approach, if it is like that, it will be realistic and you will see the rewards. You will see, then you will be able to manage it. But if you set big goals, and then your enthusiasm is, कुछ नहीं हो रहा है, ट्राई किया, नहीं हो रहा है यार, छोड़ दिया मैंने भक्ति. No. So do small things. But ideally, go to bed by 9:30. That is best. If you can go at 8:30, good, but नहीं होगा. Very few. Some devotees do that. 8:30 switch off, right? 9:30 go to bed, not beyond that. Ideally, उतना, that should be your goal at least for this year. End of this year तक keep a goal of 9:30 तक सोना है. When you sleep at 9:30, what will happen? हाँ, I'll tell you the beauty. Scientifically, whatever you sleep before 12 o'clock, it doubles. So therefore, people who sleep at 9:30 will be very fresh at 4 o'clock in the morning. Whereas people who sleep at 12, वो 8 बजे भी उठेगा तो he'll be, and then they'll go for coffee. हो रहा है ना अपना ऑफिस में. So सवेरे काम नहीं करेंगे, कॉफी पीते रहेंगे. पूरा टीम को बुलाना पड़ेगा, भाई काम करना है, कॉफी घर में पी के आना, इधर क्यों पीता है every time? Right? People will go for coffee or cigarettes in the morning. So this is how the world is, because they are not sleeping on time, right? So therefore, and now next come back. Now to be able to sleep at 9:30, full stomach बैठ के पराठा खाया है आदमी, कहाँ से नींद आने वाला है? Right or no? कहाँ आने वाला है? कुछ नहीं आएगा, डकार आएगा बस. Correct? नींद तो आने वाला नहीं है, because when your digestive system is working, शट डाउन नहीं होगा. कंप्यूटर प्रोसेसिंग चल रहा है भाई, पीछे बैच जॉब चल रहा है. करेक्ट? हाउ विल यू शट डाउन? यू कांट वाइंड अप, राइट? देयरफॉर द सीक्रेट इज व्हाट? टू स्लीप ऑन टाइम, ईट ऑन टाइम. सो बेटर इज टू ईट बाय 7:30. खत्म. मैं 6:30 बोलूं तो प्रैक्टिकल नहीं है. ऑफिस पे जाके खाना बनाना पड़ेगा, कौन बनेगा? इधर तो काम वाली है ही नहीं. करेक्ट? ओके. सो अपने को एक बनाना पड़ेगा. But try to come closer to, चलो 7:30 नहीं तो चलो 8 नहीं तो 8:30. So to begin with 8:30, after that no eating, 10:30 hitting the bed.
I'm getting up at 5:30. 7 hours sleep हो गया कांटे पे. दोपहर को 1 घंटा आराम करो. Half an hour take a power nap in the afternoon. ऑफिस में ले लो. सैलरी वही मिलने वाला है. Be prudent. आजकल होता है ना मेडिटेशन रूम, जाके सो जाओ उधर. If your house is near, come home and then sleep. Okay, anyway, it may not be practical. Okay, but whatever. So you understood the principle. So eating उसमें है, and how much you eat in the night. ऐसा नहीं कि हम लोग अच्छा खाते पीते खानदान के इतना कमा भगवान तो दे रखा, लगाओ रसगुल्ला मारो रात को, पराठा खाओ, पूरा पनीर मारो, you know, correct, full stomach, waddling like a duck after that, right? Not like that. Or even I'm saying paratha, but I don't mean to, you know, target paratha here. I'm saying वो मेरा भी ऐसे ही इडली सांबर राइस खाओ, right? Like that, and then फिर कुछ नहीं होगा, right? तो ये नहीं चलेगा. Moderation in everything we do, and try not to eat cold substances. These are all common sense. इसमें कोई भगवत गीता की जरूरत नहीं है. And then we will be able to get up in the morning. So morning उठते ही taking, if you eat early 7:30, stomach will get clear the moment you wake up. The more complicated maida you eat, then what is going to happen? अंदर एक कुरुक्षेत्र चलता रहेगा morning. Correct? तो आदमी अंदर गया टक टक, अरे क्या हो गया भाई, बाहर आओ. Correct? This will happen. तो पूरा ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग उधर बैठा रहेगा अंदर. ब्रह्म मुहूर्त में कोई कमोड. So actually this is practical. एकदम practical I'm telling you what is happening. I know it's a bit, you know, odd to discuss. No such somebody will come out here. ये सत्संग है क्या चल रहा है? But this is bhakti. Trust me, this is bhakti. Because what is it? Why are we doing all this? So that our attraction for the Lord increases. When will attraction increase? When we chant properly. When will we chant properly? When our mind is peaceful and our body is peaceful. Whenever our mind and body will be peaceful, when we sleep. When will we sleep on time? If we eat less in the night and if we eat on time. So सब कुछ उसी पे आता है. So whatever I'm thinking, please do not think this is not bhakti. This is bhakti. 100% this is bhakti. Because हम लोग ये सब चीज इसीलिए नहीं कर रहे हैं because of longevity, so that I can enjoy the material life for a long time. Every devotee has this issue that अच्छा करना है मुझे भक्ति, so that I come to the platform very fast, so that ये lifetime मेरा last, इसके बाद नहीं आना है बस, right? But वो करना है तो ये करना पड़ेगा. And these are all simple things. कुछ भी hard कुछ नहीं था इसमें अभी, बराबर है. But it's still hard because दिल है के उसको मैनेज करना पड़ेगा. We all have to make our mind our friend, because mind will tell. मुंबई टाइगर्स आर बैटिंग, लगा देखने में क्या जाता है. तो इतना दिन तो देखा नहीं, बैठ के बोला मैच देख, क्या प्रॉब्लम है? अरे तेरा टीम खेल रहा है भाई, सपोर्ट नहीं करेगा? एज इफ मैं टीवी देख रहा हूँ तो रोहित शर्मा गेट्स इम्पेटस देयर, उसको क्या फर्क पड़ता है? he is managing his career very nicely. We are losing our spiritual career. वो अपने आप को अच्छे से संभाल रहा है. Tomorrow he may retire early and he may become devotee also. हम लोग उसको देख के हम लोग गड्ढा में गया. So therefore that is office में I have already spoken last time. Become effective so that you can get the hell out of that place by 5:36 and nobody can dominate you because you are indispensable. You can't be touched. If you touch, threaten him. और कुछ भी एक काम तुम मेरे को करने को बोला, इधर से मैं जाने वाला है. I have got sir offer. देखो AGL से ऑफर आया है, Telstra से ऑफर आया है, Westpac से ऑफर आया है. देखा उसको. Make him realize how important you are. So even for that you will need time. So उसके लिए भी time management है. Have some time to do all the whatever certifications you have to do so that you are very effective. Do not plan to work very late in your life. Ideally, as per Shastras, retirement should happen at what age? 50. Sanskrit is such a powerful language. The word ekavan means 51 में क्या होता है? 51. 1 में भी 1 है. अच्छा. तो 1 में जाना पड़ता है. That's why it's called ekavan, 52. Like that. So that is the time when one has to retire.
One means not literally go to the forest. One means make your heart Vrindavan. Focus. Vanaprasth life means what? After 50 is the time to focus fully on spiritual life, where even husband and wife, वो सब जो honeymoon days, वो सब अभी करके they now are what? Now they have taken the role of what? Children have grown up. Now both of them are helping each other progress spiritually. They are checking each other's sadhana. They are discussing. They are helping each other. ठीक है? If the wife is down, then the husband helps in the house so that the wife can do her services. If the husband is down, the wife helps so that the husband can do his services and chanting. This is ideal family life. And ये अगर ये ऐसा husband wife relationship रहेगा, both of us will help us in our Krishna consciousness. Such families will become very such families will set an example for others to follow. And could be it's good. It's good for that couple that they are helping each other go back to Krishna. नहीं तो all the time क्या होगा? Even after 50, we are only thinking how to enjoy each other. वो tendency जाएगा नहीं फिर. उसके लिए भक्ति पहले से ही we have to prepare ourselves to come at 50. Financially we have to be responsible. Spiritually we have to be very responsible. Otherwise what will happen? We can material world will make us work. पीस के निकालेगा 65 तक. As I said, our dead body will go from Docklands only, from the office. और एम्बुलेंस आएगा वो बोलेगा 13th floor कम पड़ा हुआ है इधर. काम कर करके थक गया बेचारा. स्ट्रेस के वजह से KPIs की वजह से मारा हुआ आदमी. राइट SLS करते करते मर गया एकदम तोड़ दिया इसने. राइट. So this is what our life is. So we want to come out fast. So plan to come out fast. So during the day, then obviously work, but also think of how to invest your money so that it is growing. I told you last time also, have an alternate occupation also. If you want to retire fast, have an alternate occupation such a way that it will not impede your spiritual life too much. So that you can chant. There are devotees, okay, who they are all working in, for example, I know of devotees who work, they just go to office and come, salary एक चीज है. But office maybe they are working very shrewdly, so the time for investing in real estate, this, that, वो सब चल रहा है इन लोगों को, right? Parallelly कुछ ना कुछ चल रहा है. And do it. उधर हरिश्चंद्र बच्चे क्या बने, but don't पकड़े मत जाना. Okay. I'm not saying that be unethical in your job. Please don't mistake me. But I'm saying don't be foolish in your job. That's all I'm trying to say. Do the work for whatever they are paying you. That you must do, because devotees must conduct ourselves morally and ethically. But उस टाइम पे अगर आपको कुछ करना है, आफ्टर योर बॉस का KPI हो गया, डोंट गो टू हिम से बस अभी और क्या करो. वो तो बोलेगा आजा बेटा और भी है तेरे लिए. What increment they'll give you? 2% देंगे per annum. बराबर है? 2% से ज़्यादा किधर देता है कंपनी? Anyone got 20% hike? Nobody. Only when you change your job you get that hike. In the job you don't get that, right? So वो मरवा दे रहेगा आपको all the time. So financial management of health. हाँ, अभी जल्दी उठेंगे तो क्या कर सकते हैं? You will have time for chanting and exercise. नहीं तो वो भी नहीं रहेगा. पेट आएगा, कोलेस्ट्रॉल आएगा, ब्लड प्रेशर आएगा, चल नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आफ्टर सम टाइम, राइट? उसके बाद स्ट्रोक आता है तो गया फिर आदमी. हो सकता है. So therefore managing, if we know that we have a problem of obesity or whatever, then we have to take responsibility. Who else will take responsibility? We have to manage it, right? So उसके लिए भी time चाहिए. I'm saying all these things. I'm also struggling in this. But because you asked me to speak on this, I'm speaking. मेरा भी जंग यही है. But we have to struggle in this. Not that we accept it saying that I am settled now. I say, ऐसा नहीं है. We may be imperfect, but we accept that imperfection and we constantly think about what can I do next, what can I do next, right? Today also I thought about it. I had a backlog in my Shastric studies and that was preventing me from going for morning walks every day. You ask him, morning I sit down chanting and then I sit and study the scriptures. Because why? Because I was little bit lax in my studies. So I'm lagging behind in my Bhakti Sarvabhauma course. And for the first time in my life, I didn't take the exam on time. Obviously, my wife went to hospital at that time. I missed the crucial period जब वो exam होता है. So, but मैं catch ही नहीं कर पाया. I decided that ना इंडिया जाके आराम से करूँगा. But इंडिया जाके आराम कहाँ है भाई? चाकू खरीदना होता है, क्या पाव भाजी मसाला, उसी में टाइम जाता है. इसका मुंडन सेरेमनी, रिलेटिव, आंटी, अंकल, नेबर, टैक्स रिटर्न्स, इंडिया टैक्स रिटर्न्स, बैंक एक्टिविटीज, क्या फुर्सत है, करेक्ट?
राइट? काम वाली बनाती है फिर भी फुर्सत नहीं है इंडिया में. रेडीली डोसा आता है टेबल में, वो पोछा मारती है घर में आके, फिर भी नहीं टाइम रहता है इंडिया में. बाय द टाइम यू कम यू आर मोर टायर्ड. इंडिया ट्रिप से एंड बॉस बोल रहा है हाउ वाज योर वेकेशन? या नाउ यू नो यू आर वेरी एनर्जेटिक. खा के एनर्जेटिक मरा हुआ आ है इंडिया से. मैं करेक्ट और नो? एंड गॉड फॉरबिड वहां पे अगर पेरेंट्स आर इन हॉस्पिटल तो और भी नो कॉम्प्लिकेशन. पेरेंट्स को नो लेके जाओ हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, ये वो. सो वी आर डेड डक्स. सो देयरफॉर आई डोंट नो व्हाट वाज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू से. Yeah. Huh? So have time for that health also in the morning to do that. So morning time for what? Chanting and for exercise and meditation. You have to do that before you step into the corporate life, right? I know of a devotee who took a vow. He was working in the stock exchange, and stock exchange is in mode of passion. But he told his spiritual master, I can't work in that atmosphere, stock exchange. पूरा सब पैसा 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 पैसा. ओ बजाज ऑटो ऊपर जा रहा है, टेलीकॉम नीचे आ रहा है, ओ इन्फोसिस ऊपर जा रहा है, विप्रो नीचे आ रहा है. ओ मतलब पागल हो गया हूँ मैं इसमें, ये माहौल में, राइट? Stock market is a maddening place, Dalal Street in Bombay, right? So and I'm a broker. ये मैं पागल हो जाता हूँ. So what did his spiritual master tell him? He said, okay, Maharaj, how do I be spiritual in this place? And his spiritual master gave him one instruction. You have talent there. You can't change your job. Do something else now. You can't do carpentry. Correct. Therefore, his spiritual master told him, take a vow that till you finish your 16 rounds, you will not step into that office. And he said, I took that instruction so seriously. My 8th दिन भी stock exchange नहीं गया, मेरे 16 rounds किए बगैर. And he said, मैं 40 साल ऐसा काम किया. 40 से 30 साल, whatever. Long time. Discipline. Every day consistent. That is called nishtha. Right? And he said that when I went there, somehow or the other, I had, this person, I'm telling you very openly who this person. Who is this person? You know who it is. Anand Vrindavan Prabhu. I'm talking about him. Anand Vrindavan Prabhu, he was invited by Margaret Thatcher, the then Prime Minister of Britain, as a financial brain to award him a world gold medal in finance. Many people will say, "मैं finance में अच्छा हूँ." How many of you can say you are world gold medalist in finance? This is that person. Anand Prabhu, devotee. Here is classes. Okay, he will give you time management principles, right? So he said, मैं एक भी दिन गया नहीं. He is a पक्का मारवाड़ी बनिया. He said, मैं बनिया हूँ. मैं एक घंटा गिनता हूँ पैसा. For me, if I have to be a devotee और मेरा मन को शांत रखना है, तो मेरे को ये डिसिप्लिन करना ही पड़ेगा. 16 राउंड्स खत्म किए बगैर मैं कभी गया नहीं स्टॉक एक्सचेंज में. And when I went there, Harshad Mehta gave him a proposition along with Ketan Pare. Both of them gave him a proposition. दिन का 2 करोड़ बनाएंगे. दिन का 2 करोड़ उस समय. दिन का. That proposition was his. He said the only thing that saved me was, otherwise मैं इस वक्त आपको लेक्चर नहीं देता. मैं इस वक्त जेल में होता. या हार्ट अटैक से मर गया होता. जैसा हर्षद मेहता had after that. Because the directorate came behind it. It was a full scam. Loss of reputation. Family gone into the khadda, everything gone, right? The only thing which held him is this. Therefore, when we chant 16 rounds and go to work, we will get a protection of Lord Krishna to take the right decisions at workplace, to talk the right things. Krishna will compensate. You will become a star in your workplace. Okay? Leave it to the Lord, because Krishna says, I am the ability in man. उनको आप वक्त दोगे तो he can do magic in your life. He is God. भगवान है. प्रभु जी, you had a question? तो जैसे मैंने किसी क्लास में सुना था कि चैंटिंग करते हो, कोई बोलता है सुबह कर लो, शाम तक तो वैसे ही बैठ लेते हो, और वो चैंटिंग आपकी इतनी भाव से नहीं होती जो. लेकिन आप जैसे हम विष्णु प्रभु को देखें, वो कहते हैं मैं रात को भी करके सोता हूँ ताकि मेरा दिन में अगले दिन में वही हैबिट हो चैंटिंग करने की. तो असली टाइम क्या है? Vrishni Vamsa Prabhu का example मत लेना. That's not a good example. I'll tell you why. Because Vrishni Vamsa Prabhu is on a very different level in his chanting. We cannot. He is like Haridas Thakur. You have heard of Haridas Thakur. So Vrishni Vamsa Prabhu का level ही कुछ और है. He is in a very different level. हाँ. So let us not. अगर मैं आपको बोलूँगा 108 round chant करो, anybody will be able to do? नहीं कर पाओगे ना. तो क्यों वो example क्यों लेना है आपको? So don't even go. हम लोग को क्या करना है? Right now we will study grade 1, grade 2 syllabus. Vrishni Vamsa Prabhu is university syllabus. Right, PhD level, right?
वो एग्जांपल लोगे तो आपको रिलेट है। वो बाथरूम में भी चैंट करता है। He said, प्रभु जी मेरा बाथरूम में संडास में मैंने बीड रखा है। When I sit in the commode, I have a bead only which is मूची bead. I can't control myself, मैं चैंटिंग करता हूँ। Are we on that stage anyone? इधर पीछे पड़ना पड़ता है लोगों का, चैंटिंग करो भाई। वो ऐसा है, वो बोल रहा है मेरे से चैंटिंग किए बगैर नहीं रहा जाता है। That is a very advanced platform for a devotee to be in. We have to aspire to be like that devotee. We have to take the dust off his feet and rub it on our head. But that is our aspiration. But we cannot imitate that person. I cannot say मैं तेंदुलकर जैसा कल से ही खेलूंगा क्रिकेट। चलो बोलो लगाओ यार ग्लेन मैकग्रा, चल आ जाए। वो ऐसा मारेगा अपना सर टूट जाएगा, बिकॉज़ बॉल ही नहीं दिखाई देगा। करेक्ट और नो? लेकिन प्रभु टाइम कब तक फिनिश हो जानी चाहिए? कौन सा चैंटिंग का? Depends on how many rounds. Now, obviously, Ellen, you are asking, and I have to ask you questions. How many rounds are you talking about? Are you talking about 16 rounds? वैसे ही अगर करनी हो कभी, कितना राउंड करनी हो तो? कुछ भी करना हो। नहीं, कितना राउंड करनी हो? Because more time will be required. नहीं, कितना राउंड बोल देता हूँ मैं, दो एक नंबर 2 राउंड चैंटिंग। 2 राउंड चैंटिंग ना, अगर आप 7:30 को बैठोगे तो 7:40 तक हो जाएगा। 2 राउंड हो गया, खत्म हो गया। करेक्ट ना? बट फिर भी अगर आप मंगल आरती में बैठोगे, आप 2 पे रह नहीं, आप you will feel like chanting more. If you chant in the morning, you will feel like chanting more. You will not stop because it's a very blissful activity. You cannot stop. Mind fresh है, नहा के बैठो, एक अगरबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, भगवान के सामने बैठो। You will feel like going on and on. अपने आप आके मेरे को बोलोगे प्रभु बंद ही नहीं हो रहा है, 16 के बाद भी लग रहा है चैंट करना चाहिए। ऐसा this is everyone's experience प्रभु। तो वही एग्जांपल में पहले मैं करता था 4 बजे उठ के, मेरी वाइफ 4 बजे उठ के करते हैं 16 राउंड। 1-1.5 महीने बाद खत्म हो गया, 2 महीने, मैक्सिमम 2 महीने बाद। So good, but do you have good memories of those days? So continue that. Continue that. If you have good memories of those days, that means you were doing something right in those days. Now आप ही को पता है कि आपने क्या right किया। Most likely आप लोग जल्दी सोते थे, शायद उन दिनों में, possibly, या कम खाना खाते थे रात को। Most likely कुछ तो आपने ठीक किया होगा कि 2 महीने आप कर पाए उसको। 2 महीने is a good time. उसके बाद क्या हुआ ये आपको ही पता है। So you will have to now become the राजेश खन्ना। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, जब हुआ, कब हुआ। You have to go into the root cause analysis now and find out what is that, and now prevent that from happening again in your life. You are the master. If there are specific troubles, we can have one-on-one conversations. I'm happy to hear and support. ठीक है? You have a question? Somebody had, okay. So everyone okay with this? So the timetable means what? Now you form your own timetable. Do one thing. Put a draft timetable for yourself. Come in the next class and tell me your challenges. कि क्या है वो? But make a practical timetable. ऐसा नहीं कि वो माधुरी दीक्षित का पोर्ट्रेट बनाया है उधर बैठ के. Okay. And then thinking that one day I will also look like her. ऐसा नहीं होने वाला. Correct है ना? So 1 minute ना प्रभु जी. So make something which is very. It should have integrity. Okay. You have read The Fountainhead by Ayn Rand. Anyone has read that book? Nobody has read. Okay. Okay. So he says a structure a building should have integrity over that. The design. So like that, our whatever we prepare, whether it's a financial plan or whether अगर financial planner को जाके झूठ बोलेंगे तो वही वापस वही गार्बेज ही मिलेगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट। सच बोलना पड़ेगा कि कहाँ पे है मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है। वैसा we have to be honest about ourselves and make a honest plan. Such that what did we say? What should be your plan? This is only version 1.0 of your time management. There will be many versions in future. Accept it. Version 1.0 में क्या होगा? Big transformation or Kaizen? What will you do? Kaizen. Small improvement. छोटा सा करो कुछ ये प्लान में जो आप आज नहीं कर पा रहे हो। Say that okay, my daily 1 lecture I will hear. कब? अलग से नहीं, ट्राम में. Instead of sitting and watching outside. और the eagle bungle of the docklands. उससे अच्छा मैं क्या करूँगा? कान में ये डाल के सुनूंगा. Okay. And if my boss tells me take a call, I will schedule all my meetings only after that time. ट्राम में जैसा ही बैठा मेरा कान में लेक्चर शुरू हो गया. And I will sit in the back seat and attentively आंख बंद करके मैं सुनने वाला हूँ. And if required, I'll take a notebook and make notes of the lecture. This is a simple thing. इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा क्योंकि आपका travel time में आप लेक्चर सुन रहे हो. बराबर है? और say that बर्तन करते वक्त, as I told last time, बर्तन करते करते I will hear a class. Right? This is a simple thing. Saying that before I go to bed, I will just read 1 verse with purport of Prabhupada. वैसा मैं अपना भगवद गीता रीडिंग आज से शुरू करूँगा. कितना 1 verse. तो 700 days, which means 2 साल में आपका भगवद गीता स्टडी हो गया.
You have at least read everything in the Bhagavad Gita. And क्या किया आपने? अपने आप को आपने strain भी नहीं किया, आपका नींद नहीं गया, कुछ नहीं गया आपका, because you made a small goal in your life. So make small goals. प्रभु जी, sorry, you had a question. एक और चीज है, जैसे हम चैटिंग करें, और मैं सुबह उठ गया जल्दी, हाँ, चाहे बाथरूम के लिए उठा दूंगा, उसका नींद नहीं आ रही, मैंने सोचा चलो नींद नहीं आ रही, लेटे लेटे ही चैटिंग कर लो, अगर माला नहीं अवेलेबल है तो इज इट कि आपको बीट्स पे ऊपर ही करनी होती है चैटिंग, क्या आप वैसे भी काउंट कर सकते हो? नहीं, बीट्स पे करना होता है, बिकॉज दैट इज बीट्स पे चैंटिंग करना, तुलसी पे चैंट करना हैज गॉट अ स्पेशल इम्पैक्ट, इट्स गॉट अ स्पेशल मेलो ऑफ डूइंग इट. वैसा इट्स लाइक सेइंग दैट ऑफिस में आयरन करके शर्ट पहनना पड़ेगा क्या, या धो के वॉशिंग मशीन में लेके सीधा पहन के जाऊं, एट द एंड ऑफ द डे काम ही तो है ना, बट स्टिल होता है ना. अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सपोज को हाँ? मैं ट्यूसडे चले जाता हूँ काम पे, हाँ, सेकंड डे उठ जाता हूँ वेस्ट से, हाँ, तो वो काफी टाइम लग जाता है हाँ, सुबह हाँ, ट्रैफिक में हाँ, घंटे से ऊपर, तो हाँ, उसमें मैं क्या करता हूँ, ये- प्रभुपाद की लगाता हूँ, वेरी गुड. साथ में करते जाता हूँ, लेकिन बीट्स नहीं होते. नहीं नहीं, वो आपका एक्स्ट्रा राउंड आप कीजिए, जितना भी कीजिए वैसा, लेकिन आपका पर्सनल टाइम होना चाहिए कृष्णा में. एटलीस्ट वन राउंड शुड बी योर पर्सनल टाइम विद बीट्स. कृष्णा, सी कृष्णा इज कमिंग टू यू एंड यू आर टेलिंग हिम, कृष्णा देख भाई, मैं तेरे को पर्सनल टाइम तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं जब गाड़ी चला रहा हूँ मैं तेरा देख लूंगा तेरे को, ऐसा चलेगा क्या? दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग हिम. आई डोंट हैव एनी पर्सनल टाइम फॉर यू माय डियर लॉर्ड, बट व्हेन आई वांट यू, you don't say that I am busy with other devotees. Then you should exclusively come. मतलब मुझे कुछ हो गया तब उस वक्त में जरूर आना और मेरा पर्सनली ध्यान रखना. So if we become impersonal with the Lord, He will also deal with us what? Impersonally. ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्. As we approach Him, He will reciprocate. Okay. So that is why वो पर्सनल टाइम आप छोड़िए. किसी दुनिया भाड़ में गया, आपका पर्सनल टाइम आपका हक है, वो nobody can take it away. कोई भी आए, वाइफ भी आए, सन आए, बोलेगा अभी नहीं, बाद में, अभी मैं ये कर रहा हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी. सो इट्स अप टू यू. वी ऑल हैव टू फ्लाई आवर ओन प्लेन. वी कैन नॉट अलाउ द वर्ल्ड टू, वो बोलते हैं ना क्या, दुनिया के रंग में रंग गए हम. डोंट लेट द वर्ल्ड ड्राइव यू टू इट्स एजेंडा. You manage, take control of your plane and drive your agenda. Then you are proactive leader. Otherwise, we are sitting in the passenger seat. जहाँ क्या बोलते हो, जगजीत सिंह का गजल, जहाँ रुख ले गया, हवा ले गया, वहीं के हम हैं. वैसा है, वो वैसा नहीं है. Don't become a, what is that, वो क्या बोलते हैं, फेदर होता है ना, वो हवा में ऐसा उड़ता रहता है, उधर से हवा आया तो उधर जाता है, कल वो बाद में पेड़ के ऊपर पड़ा रहता है, एक दिन सडनली वो गैराज के डोर पे कल गाड़ी के ऊपर आ गया. It's not like that. जहाँ हवा आता है उधर बहता जाता है. No, take charge of your life. Take charge of your life. Time management means what? Make practical things. Make delta improvement. Take charge of your life. And we will. I am taking this home now. मैं रिजल्ट घर में देखूंगा, तन्हाई में. Okay. But then we will have a strategy for all of you. Trust me. We will have a strategy for all of you. Performance appraisal होगी. No, I'm joking. Okay, but we will help you. That's why we are here. We want to help you. We will help you. Okay, we are there. I promise you. We will give you time. अगर आपको पर्सनल टाइम चाहिए, हम आपके घर आएंगे, ठीक है? And we will give you personal time. कितने लोग भी बुलाओगे उतने लोगों के घर पे आएंगे, ठीक है? If you want to have one-on-one, but we will open this street and we will discuss our problems. ठीक है? Okay. What is that? जीरो सुन के ओ कृष्णा. नहीं, I'll tell you why I can tell you this. Because मैं भी ऐसे ही शुरू किया. ऐसा नहीं I have गौतम बुद्धा इधर बैठा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है. नॉर्मल, हम लोग सब ऐसे ही शुरू किए अपने भक्ति. बराबर है. कोई इंसान मंदिर में आके पूछा, वृष्णिवंशा को प्रभु को जाके पूछिए कैसा शुरू किया. वृष्णिवंशा प्रभु also started like this only, tentatively. Right? I know him since the initial days. Everyone was very uncertain about what they wanted to do. So, first of all, one thing, I want to end on a good note. All of you are very special because you all are at least open to the idea of chanting. So, you already are a very rare species in this world. And Krishna has seen that. Now, Krishna is giving you facility to come to Him. If you take these steps, then you can bring your family also eventually into it. If you are happy in bhakti, then, and if by your bhakti you become humble, your spouses will see
something good has changed has happened in you. And then that will become the advertisement for the spouse also to come to the program. Correct? But ये chanting के वजह से, if the spouse is not getting breakfast on time, then the spouse is going to stop your chanting. Does it make sense? That is why we played that game in the picnic. क्या था वो? Two-legged race था, three-legged race जो खेला हुआ. तो first we have to. So I know that it's not easy when one partner is interested and the other is not interested. It's not easy in that case, right? But अपने को जाना ही पड़ेगा भगवान को. We have to fly our own plane regardless of who is interested or not, because our spouse is our spouse only in this lifetime, not after this. So we cannot put all our eggs in that basket. So at some point in time, we have to move ahead, but without impacting our familial responsibilities. Chaitanya Mahaprabhu told Rupa Goswami that the wife cooks so nicely at home, right, and is so busy that she doesn't even suspect that the wife is having an extramarital affair, because she is doing her housework very nicely at home. Now, who is this extramarital affair with? Krishna, right? भगवान के ऊपर इतना प्रीति है, लेकिन घर का ड्यूटीज ऐसा संभाल रही है कि किसी को भनक भी नहीं आ रहा है, ये पूरा टाइम कृष्णा के बारे में सोच रही है. That is the formula that Prabhupada gave to Rupa Goswami. Right? Chaitanya Mahaprabhu gave to Rupa Goswami. So it's a very famous verse in Chaitanya Charitamrita. Okay, so we will end our session here. It's not that we are ending our time management conversations here. We will end this because next week onwards we will get back to our agenda of progressing on our depth of understanding of many aspects of Bhagavad Gita. So we will come back to our week 1, week 2 our schedule. The other thing that I want to introduce, मैं आपको heads up देता हूँ, फिर we'll stop for today. That I also want to introduce now the concept of homework for all of you. Okay, what kind of homework? Transcendental homework, right? It is very important to know about our acharyas. Okay, it should not happen that after many years of initiation we can't remember who is Prabhupada's spiritual master and we are asking इनका नाम क्या है, and then somebody has to tell you this is Bhakti Siddhanta Saraswati. It's a pathetic situation if that happens, right? So we have to understand the personalities who are there, because we are going to embrace this sampradaya, do our bhakti in this sampradaya, and by hearing the charitra of these personalities, you will find that it is extremely purifying and inspiring for all of you. So we will make groups and we will have presentations. Okay. Your suggestion during the retreat, right? So we will make, you all will now take lot of ownership for learning. I am not going to only keep sitting and lecturing here. आप लोग group activities करोगे, you all will present, like that all of us will learn. वो भी methodology लेके आएंगे. Finally, we have to know about our founder Acharya Srila Prabhupada. So we will introduce some component of Srila Prabhupada also eventually. So ये आगे का अपना journey है, अभी trailer बताएगा. ठीक है? So please keep coming. Thank you. And I beg at your feet any apologies if I have gone over my limit in speaking something and you all didn't like it. मैं आपके चरणों में माफी मांगता हूँ उसके लिए. Please pardon me for being, if I have gone overboard. Thank you. Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद की जय. एक क्वेश्चन है, ठीक है? महाप्रसाद गोविंद बोलने के बाद पूछिए, ठीक है? महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे अल्प पुण्यवतम राजन विश्वासोनैव जायते शरीर विद्याजाल जडेन्द्रियता हे काल जीवे फेरे विषय सागरे दारा मध्य जीवाति लोभो मैश्वर्यमति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयो मोय कोरी बारे जीव जाय स्वप्रसाद न दिलो भाई से नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे दाको चैतन्य विदाय जय निमाय जय निकाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. राधा वल्लभ महाप्रसाद की जय.